Good morning, friends. Welcome back to our online sessions of class 8 science. I hope you all your family will be fine in this pandemic situation. So unnecessary, don't go outside your homes and always be stay home, stay safe. And if necessary, if you want to go outside, then use the protective mask of layer on your face. Always be wash your hands, sanitize your hands whenever you touch something else. And by using your homes, always be using the study of the digital medium of learning which is provided by the schools and other digital medium of sources. Okay. So I hope you all are fine and stay home and stay safe. Now today we're discussing about more ahead about the chapter number 2, that is called microorganisms. If you know about that, in the previous 2 lectures which have been done in the previous classes, we're discussing about the microorganisms. What is called microorganisms? How this type of the microorganism that should be classified, in which generally we are discussing the mainly 5 types of the microorganisms, which is in a detail, okay, how there are benefits, how they are the harmfulness for us, using the protective form of the figures that we are discussing in the previous classes. Also we are discussing about like what are the organisms are called unicellulars and what are the organisms are called multicellulars, how they can be survive their life onto the particular ecosystems, having a single cell or having a more than one cell, how their body shape and size will be changed, differ than with the other organisms. Generally, if you've seen the different kind of substances as a part of living or non-living around of us, also you've seen some of the animals or maybe some of the plants around of us. But the organism which cannot be seen, that is called microorganisms. So, on the today's topic, we're discussing about how this microorganism is harmful for us and how this type of microorganism that is cause the disease into the humans, or maybe they cause the disease into the plants, or maybe that cause the disease into the animals. Which are the disease that is caused by the which type of microorganisms, like some of the disease implemented by the algae, fungus, bacteria, virus, etc. Also we are discussing about how the food that can be poisoning, which generally having a food poisoning in our body, how we can be prevent the foods in which the difficult method, different methods are there, like chemical method, preservation by the salt, preservation by the sugar, preservation by the oil and the vinegar, as well as also preservation with the treatments and how that should be packing. These are the general topics that we have to discussing in your today's lecture. So let me start from the first topic today. It is called harmful microorganisms. So when we discussing the different type of microorganism in your previous classes, okay, what is algae, how the fungus that can be seen, what is protozoans, what is bacteria and what is virus, and how they can be harmful and helpful. So that generally topics we discussing in our previous classes. The microorganisms are harmful into the many ways. Different ways are there in which this type of microorganism is harmful for us. Microorganisms generally cause the disease into the human beings, animals and the plants. So these are the microorganisms which cause the disease, that is called pathogens. Pathogens, pathogens. So generally this type of the organisms of a microorganism which cause the disease into the living organism, that is called as the pathogens. Generally some microorganisms which generally spoil the food, making the clothing and the leather, etc. Some of this happening when the microorganism that affect into the living organism. So first we today discussing about how the disease that cause into the human beings. Now that is called as a pathogen. So the microorganism which cause the disease, that is called pathogens. So I always be repeat the word is called pathogens. Now these pathogens enter in your body, the pathogens which enter in your body through the different methods in human body, like maybe the medium of air which you used to be breathing, medium of food that we used to eat, medium of water that we use for the drink. So this type of the organisms of pathogens which enter in your body through the medium of air, medium of water or medium of food, as well as they also get to transmitted by the direct contact if the any infected persons that is communicated with the any healthy persons. So such kind of disease is also called as a communicable disease. Like for example, any infected persons having like sneezing and some of the affected, and when sneezing, so some of the droplets of a form of sneezing, the droplets or maybe coughing, those droplets that should be removed in a form of atmosphere, and that is generally expanded in a very large form.
approximated 3 to 4 feet that can be implemented. So any healthy persons which is available into that particular atmosphere, if that inhale that kind of the infected form of air which having this type of pathogens, is also infected to the healthy persons. Like, so this type of effect is called as a communicable disease, right? Recently we seen that like novel coronavirus is also be infected by a communicable disease. If any infected persons having the effect of corona in their body, if it's sneezing and coughing, the droplets as a form of water which is enter into the atmosphere, and if it available into the atmospheric of the droplets, if any healthy person will accept that kind of droplets, will also be infected that kind of disease. So this is called as a communicable disease. So when a person suffering from this type of common cold, sneeze, or maybe some of the virus infected, so these droplets enter into the moisture, thousands of droplets that can be enter into the any healthy persons, that can be also be may ill or sick to that particular healthy person. So what we have to do? What we have to do to stop the spread of this kind of the communicable disease? So it is very advisable, so we should keep a handkerchief on your nose and mouth while sneezing and coughing. So that's why we are using the mask right now. So if any sneezing and coughing when generated by any healthy persons or maybe unhealthy persons, that cannot be entered directly into the atmosphere. So the healthy persons cannot be inhaled that kind of the infected formation. So that is called as a communicable disease. Some of the disease can also be transmitted by the insects, that is called as a carriers. In कैरियर्स मतलब व्हाट दैट कैरी दिस टाइप ऑफ डिजीज. अभी हम देखते हैं ना कोरोना वायरस के अंदर दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं, असिम्टोमेटिक और एक सिम्टोमेटिक. अगर हमारे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस के अगर इफेक्टेड है और हमारे अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, ना तो हमें खांसी हो रही है, ना सर्दी हो रही है, ना बुखार आ रहा है, ना मुझे टेस्ट में कुछ इफेक्ट है, ना स्मेलिंग में कुछ इफेक्ट है, फिर भी अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड असिम्टोमेटिक इफेक्ट. बट इट इज़ अ वेरी डेंजरस असिम्टोमेटिक इफेक्ट. डेंजरस क्योंकि वो एक तरीके से कैरियर है, वो कोरोना वायरस के साथ में लेके घूम रहे हैं और कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे हैं. दूसरा आता है असिम्टोमेटिक के बाद सिम्टोमेटिक, जिसमें आपको 4-5 दिनों में लक्षण दिखने लगते हैं, गले में खराश होने लगते हैं, बुखार होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, दैट इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक. तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है. सो इट इज़ एडवाइजेबल, अगर ऐसी डिसीज होती है, अगर आपको इस तरह का कम्युनिकेबल डिसीज है, तो हमें हमारे नोज और माउथ को प्रोटेक्ट करके ही रखना चाहिए ताकि ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर इनहेल ना हो जाए. So that kind of the carriers like insects which are generally called as the carriers of the disease which causing the microbes. तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, इस तरह के जो डिफेक्टेड फॉर्मेशंस होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं, उसको कैरी करते हैं और इसको कैरी करते हैं अलग अलग फॉर्मेशन में और हमारे बॉडी के अंदर एक पैथोजेंस को जो है रिलीज करते हैं. जिसमें हम देखते हैं कि हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ द मोस्टली कैरियर विच जनरली कैरी दिस टाइप ऑफ द पैथोजेंस. इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं ना, वो कैरी करके चलते हैं. कैसे? Generally housefly are sitting onto the garbage or maybe animal excreta, वहाँ पे ज़्यादातर बैठे हुए रहते हैं. When this type of the pathogens which available into the excreta and the garbage of the animals which generally stuck into the form of these carriers, यानी ये जो housefly होता है उसके अंदर वो stuck हो जाते हैं. And when the housefly is come into formation of your kitchen areas, जहाँ पे food uncovered है वैसी जगह पे बैठते हैं, और द फूड पार्टिकल्स है वहाँ पे बैठते हैं. तो ये सारे जो पैथोजेंस जो वो स्टक करके लेके आया है, वो कहाँ रिलीज होते हैं, वो फूड पार्टिकल्स पे रिलीज होते हैं. और वही फूड पार्टिकल्स अगर आप यूज़ करते हैं एज अ पार्ट ऑफ ए न्यूट्रिशन, तो भी क्या होता है, वो पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं. सो इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि ऑलवेज भी कवर्ड द फूड को हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए. डू नॉट यूज़ द फूड विच हैविंग द अनकवर्ड, क्योंकि उस पर इस तरह के जर्म्स या पैथोजेंस हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. So consuming of uncovered items are generally not be advisable, वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है. दूसरा का एग्जाम्पल होता है कैरियर का. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर दैट इज कॉल्ड एमोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एमोफिलिस मॉस्किटो, जो कौन सा इफेक्ट करता है, वो ज़्यादातर आपका कैरियर करता है एक डिफेक्ट डिसीज को, मलेरिया. प्लाज्मोडियम जो है वो इन्फेक्टेड करते हैं. तो मलेरिया इज वन ऑफ द डिजीज विच जनरली इम्प्लीमेंटेड बाय सच काइंड ऑफ कैरियर्स ऑफ द माइक्रोब्स बाय द एमोफिलिस फीमेल एमोफिलिस मॉस्किटो. उसके अलावा डेंगूज है, चिकनगुनिया, दिस और आर इम्प्लीमेंटिंग द फीमेल एडिक्यूस मॉस्किटो, इसके थ्रू वो इम्प्लीमेंटेड होता है. सो दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट इन अवर बॉडी लाइक डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया,
नॉर्मल फीवर, टाइफॉइड, दिस जनरली हैपनिंग डन बाय द कैरियर्स। ये फूड को स्पॉइल करते हैं, वाटर को स्पॉइल करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, देन इट शुड बी जनरली इफेक्ट आवर हेल्थ। So what we have to do to stop this type of the effects of dengue, chikungunya as well as the malaria? Generally all this type of mosquitoes are breed into the water. ये water के अंदर ही रहते हैं। Hence जहाँ पे water storage है, जनरली हम देखते हैं हमारे घर के आसपास टायर है या कुछ ऐसे फ्लावर पॉट्स है या आपने ऐसे ट्यूब्स रखे हैं या ऐसा कोई स्पेस है जहाँ पे वाटर हमारा कलेक्ट हो रहा है, तो प्रॉपरली आप उसको रिमूव करें। डू नॉट कलेक्ट द वाटर इनटू योर सरफेस ऑफ हाउस। अगर ज़्यादा वाटर कलेक्ट होगा तो वाटर को स्टेगमेंट करेगा और वहाँ पे इस तरह के जो कैरियर्स होते हैं दैट शुड बी कैरी दिस टाइप ऑफ इफेक्ट, तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। वो अलग अलग तरीके के डिसीज हमारे बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंटेड करते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज दैट इम्प्लीमेंटेड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइक्रोक्लस ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया उसके थ्रू इम्प्लीमेंटेड होता है। दूसरा जो डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं पोलियो, पोलियो जो है वो वायरस के इफेक्ट से होता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस के इफेक्ट से होता है। कॉलेरा, टाइफॉइड ये दोनों जो है वो बैक्टीरिया के इफेक्ट से होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोन के वायरस से होता है और हेपेटाइटिस वो आपका वायरस के इफेक्ट से होता है। तो ये सारे जो डिजीज़ होते हैं अलग अलग तरीके के फॉर्मेशन से होते हैं। एयर का मीडियम हो सकता है, वाटर का मीडियम हो सकता है, मॉस्किटो के थ्रू हो सकता है, फूड का मीडियम हो सकता है। तो अलग अलग मीडियम से ये जो डिजीज़ होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंटेड होते हैं, जो किसी भी हेल्दी पर्सन्स को इनहेल्दी करके ये डिजीज़ उनके बॉडी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दिस आर द टॉपिक्स विच इज़ डिजीज़ कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर एक ऐसे डिजीज़ कॉज होते हैं। दूसरा टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे दैट इज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये डिजीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं? लाइक सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ओनली कॉज द डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, most of some of the pathogens which generally affect the plants and humans, but also we're discussing about the some of the animals in other animals, some of this type of pathogens which also affect the animals, that is also a part of the pathogens which affect to the animals. So for example anthrax. Anthrax is one of the dangerous a part which generally seen into the humans and cattle, that disease caused by the bacteria. Anthrax is one of the most dangerous part of the disease which is generally done by the bacteria and we see into the animals as well as the humans. So foot and mouth, generally foot and mouth disease which is generally caused by the virus which generally seen into the animals. So different kind of disease also have been implemented into the animals by this type of the microorganism. So animals also suffered by this kind of the disease which is generally implemented by the bacteria and the virus. जिसमें anthrax है या आपका foot and mouth है, these are the generally happened by the virus and the bacteria which is generally seen into the animals. Now third is a disease causing microorganism in the plants. How the plants that having suffer into the disease of like using these microorganisms, कैसे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म इस प्लांट्स के अंदर इम्प्लीमेंटेड होते हैं और कौन कौन से डिजीज जो है किसके थ्रू इम्प्लीमेंटेड होते हैं? तो सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज इनटू द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी स्पेसिफिकली हम देखते हैं वीट के प्लांट है, राइस के प्लांट है, पोटैटो के प्लांट्स है, शुगर कैन है, ऑरेंज है, एप्पल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है। ऐसे अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ना उस पर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिसको पैथोजेंस कहते हैं वो इफेक्टेड करते हैं और इसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो भी सफर करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो हम उस पर यूज़ करते हैं ताकि वो इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स है प्लांट्स को उससे हम प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे रूट स्क्रैपिंग होता है, एक उसका स्टीम स्क्रैपिंग होता है, फ्रूट को स्पॉइल करता है, पूरे क्रॉप्स को स्पॉइल करता है। ऐसे अलग अलग तरीके के पैथोजेंस जो होते हैं प्लांट्स पे भी देखने को मिलते हैं। प्लांट्स डिसीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना उसमें कैंकर और साइट्रस होते हैं। प्लांट डिजीज़ के अंदर एक को हम कहते हैं कैंकर, एक को कहते हैं साइट्रस। ये दोनों जो होते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं और ये एयर के मीडियम से प्लांट्स के अंदर आते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड टू बी medium of air for their growth, so they also use the food as a part of the manure or fertilizer, they also use as a water as a part of the irrigation, and they also use the air as a part of the photosynthesis process for their growth and development. So that canker and the citrus which is generally done a part of the disease which done into the plants by the bacteria which having the mode of air के मोड से होता है। रस्ट ऑफ वीट, जो वीट्स होते हैं ना पाउडर के फॉर्म में रस्ट ऑफ वीट देखने को मिलता है, ये फंगस की वजह से होता है। दैट जनरली इफेक्ट ऑफ द फंगस। फंगस अगर
मॉइस्चरेबल, जैसे अभी वीट्स है, वीट को आप लेके आते हैं और रखते हैं कहीं पे, और फंगस एनवायरनमेंट है तो धीरे धीरे रस्टिंग होने लगता है, उस पर फंगस का इफेक्ट होता है। ए मीडियम एयर के मीडियम से भी होता है, मॉइस्चर दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और सीड्स अगर प्रॉपरली ना हो तो भी ये आपको रस्टिंग देखने को मिलता है। सो दिस आर जनरली इफेक्ट दैट सीन इनटू द फॉर्मेशन। तो तीन हो गए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में कैसे डिजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, कौन से अलग अलग मीडियम्स हैं और किसके थ्रू होते हैं, या वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, या प्रोटोजोन्स हो या फंगस हो। तो दिस आर जनरली पार्ट्स इन विच दिस टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्मफुल एस्पेक्ट टू द प्लांट्स, एस्पेक्ट टू द एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उसमें वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कसिंग अबाउट द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं ना। फूड पॉइजनिंग जनरली इम्प्लीमेंटेशन लाइक, एक एग्जाम्पल उसके लिए एक एक्टिविटी समझते हैं कि लेट आई इन्वाइट अ फ्रेंड टू माई हाउस फॉर अ डिनर और मे बी अ लंच। आई इन्वाइट टू माई फ्रेंड्स टू माई हाउस फॉर अ लंच और डिनर. He ate a variety of food which is available there, different type of variety of food stuff which is available, and he used to eat that thing. When he reached at home, he start to be vomiting. उसको vomiting होना start हो जाता है, and we had to be taken as a hospital. उसको हम hospital लेके जाते हैं. So it generally suggests कि doctor said that कि whatever the food he used, the condition that could be a part is like looking at food poisoning. It is like a food poisoning. देखने से ऐसा लग रहा है इसको food poisoning हुआ है. So food poisoning that could be due to the consumption of food that is generally spoiled by the some microorganisms. Food poisoning is what? Food poisoning is generally could be implemented due to the effect of the spoiled food which is generally done by the microorganisms. जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पैथोजोन्स होते हैं उस फूड पे इंजेक्ट करते हैं, और वो पैथोजोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो दैट शुड बी क्रिएटिंग द फूड पॉइजनिंग इन अवर बॉडी. सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट विल बी ग्रो इन अ फूड समटाइम्स प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंस. टॉक्सिक सब्सटेंस इज व्हाट? इट इज अ वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड इट जनरली गिविंग द वेरी हार्मफुल इफेक्ट टू अवर हेल्थ एज वेल एज दैट शुड बी ऑल्सो डिस्ट्रॉय द सेल्स. सो दिस टाइप ऑफ द पैथोजोन्स विच एंटर इन द फॉर्म ऑफ फूड which generally spoil the food and also release the some of the toxic substances. So this type of toxic substances causing the poisonous effect into the food, and with this type of the poisonous effect of food when used as a part of the food particles, that also create the poisonous effect in your health. So that situation is called as a food poisoning and that should be generally spoiled by the microorganism. तो ये होता है food poisoning के बारे में. So if what precautions that we have to taken care to preserve our food. फूड अगर प्रिजर्व करना है तो what we have to do? फूड प्रिजर्वेशन के भी अलग अलग टेक्निक्स होते हैं. फूड प्रिजर्वेशन अगर हमें करना है तो कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. तो फूड प्रिजर्वेशंस में अलग अलग टेक्निक्स आते हैं. तो पहले हमें समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? जनरली अभी स्टार्टिंग इन चैप्टर 1 वी स्टडीड अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड ऑल्सो स्टडीड अबाउट हाउ दिस टाइप ऑफ क्रॉप कैन बी स्टोर्ड. क्रॉप को कैसे स्टोर करना है, क्यों स्टोर करना नेसेसरी है, दैट वी डिस्कसिंग इन द फर्स्ट चैप्टर्स. सो हाउ डू वी यूज टू प्रिजर्व फूड. प्रिजर्व फूड को हम कैसे यूज करते हैं एट योर होम. सो जनरली वी नो दैट के द ब्रेड विच लेफ्ट इन योर होम दैट शुड बी अनयूज्ड विच जनरली हैविंग अ इन अ ओपन एनवायरमेंट cause the effect of the fungus and bacteria. Generally we seen that if there is effect which is the unseen, that particles of bread and roti which is available into the environment which generally cause the effect of fungus. So microorganism that spoil the food which is available into any specific area, there are favorable conditions that can be spoil the food. So spoiled food generally give the bad taste, bad smells, also be lost the nutrition and having a different type of chemical reactions. So if this type of formations, if we use as a part of food, that also be having a loss of the taste of food. For example, if you purchase some things from the market, suppose अभी rainy season से पहले हम mangoes purchase करते थे. Let us purchase some mangoes from the market. Okay? अब इस mangoes को few days के बाद अगर आप खाते हैं तो उसके टेस्ट के अंदर या उस पर आप देखें तो ब्लैक स्पॉट्स होने लगते हैं या वगैरह, ये सारे इफेक्ट्स आपने देखे होंगे. सो जनरली ये जो फूड्स आप देखते हैं वो स्पॉइल हो जाता है. अगर आप उसको ओपन एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी दिनों तक रखते हैं तो कैसा भी फूड होगा वो जल्दी स्पॉइल होने लगता है.
तो ये जो स्पॉइल होने लगता है फूड, वो क्या करता है, फूड को पूरा का पूरा स्पॉइल कर देता है, अनयूजेबल रखता है. इट कैन नॉट बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द ईटन. It is not used as a part of that should provide to the animals also as a part of nutrients. So that can be entirely food, so that should be spoiled. So what we have to do, what are the methods that we have to adopt it, that we stop to spoiling this type of food by some of the microorganisms which is called pathogens. So there are the general techniques which is available to preserve the food. फूड को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती है, उस मेथड का यूज़ करके हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं. वी जनरली प्रिजर्व द फूड. तो दिस आर द जनरली मेथड्स इन विच केमिकल मेथड इज देयर, प्रिजर्वेशन बाय द सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय द शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, एंड द वन इज कॉल्ड एज अ स्टोरेज एंड पैकिंग. So these are the general techniques. If we adopt this type of techniques, we generally preserve the food. We generally preserve the food. Okay. So preservation is one of the techniques. By applying this method, we stop effect of the microorganisms which cannot be spoil the food. इसमें पहला method है chemical method. First method is called as a chemical method. Now chemical method is what? Like salt and the edible oils are the common chemical generally methods which are used to protect this type of foods. Generally chemical method में क्या होता है, chemical method के अंदर salt and the edible oil are the general common chemical substances generally used to check the growth of the microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है इस फूड के अंदर, वो चेक करने के लिए हम इस दो सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स. ये जो एडिबल ऑयल है या सॉल्ट है, इसको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं. दे आर जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो इसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं. इस प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके भी आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. सो वी एड सॉल्ट और मे बी सम ऑफ द एसिड प्रिजर्वेशंस टू पिकल्स. पिकल्स जो होता है टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम्स होते हैं. सो वी हैव टू ऐड सॉल्ट एंड सम ऑफ द एसिडिक मीडियम्स एज अ पार्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स टू द पिकल्स. सो इट कैन बी प्रिजर्व द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स का अटैक होता है उससे वो प्रिजर्व करता है, उसको प्रिवेंट करता है. लाइक सोडियम is one of the part, like sodium bonzate and sodium methyl, that is called as a metabolist flight. It is one of the also a part of the chemical substances which used to use as a part of the preservatives. इसको भी हम preservatives के फॉर्म में यूज़ करते हैं. तो these are generally chemical methods जिसमें हम chemical substances को mix करते हैं, and that is generally used to preserve our food. वो हमारे फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है. तो जिससे फूड जो होता है वो स्पॉइल नहीं होता है. It should be reduce the attack of the microbes which is done into the food particles. ठीक है. तो I hope whatever you discussing today that should be easily learned and understand by you. So students, keep revising, keep studying, keep practicing on this type of the questions till try to solve your own words this question. How can we write the answers? Keep revising, keep studying, and remaining topics of the food preservation that we'll discussing in the tomorrow's lecture. But whatever we studied today, that is about how this type of microorganism is harmful for us. It's generally not for us, it is also for the humans, animals and plants. Also we're discussing about the food poisoning. What are the methods of the food preservation, in which we're discussing only the chemical method today. Remaining methods like preservation by the common salt, preservation by the salt, sugar, preservation by the oil and vinegar, preservation by the cold and heat treatment, and the food and storage, as well as the cycles of the nitrogen and the carbon cycle, oxygen cycle. These are the topics we're discussing tomorrow. So keep revising, keep studying, keep updating yourself to the creating of knowledge. And I request you to stay home, stay safe till revise your topics which we were discussing in the previous lecture. Students, take care. Bye.